Hello aspirants, welcome to CSAT FIT PYQs. This is question asked in CSAT 2024. That is, in some code, letters P, Q, R, S, T represents 4, 5, 10, 12, 15. It is not known which letter represents which number, right? We don't know which letter represents which number. If Q minus S is equal to 2S. So Q minus S is equal to 2S. That means, see, QS becomes here. So Q is equal to 3S. 3s, then what is then, and q, if it is this, and t is equal to r plus s plus 3. T is equal to r plus s plus t. Okay, so r plus s plus 3, then what is the value of p plus r minus t? So we need to find out values of क्यू एस पी, जो मतलब इनमें क्या क्या है, पी क्यू आर एस टी का वैल्यूज वी नीड टू फाइंड आउट. सो नाउ लेट्स टेक सी, हियर वी आर गिवन क्यू इज इक्वल टू 3s. सो दैट मींस क्यू हैज टू बी 3 टाइम्स ऑफ s. सो लेट्स टेक सी. अब देखो इसमें फ्रॉम दिस वी कैन से भाई s कैन नॉट बी 15 बिकॉज q 3s आना चाहिए, एंड s कैन नॉट बी 12 बिकॉज q हैज टू बी 3 टाइम्स ऑफ s, राइट? अगर 12 लिया, ठीक है, अगर s 12 लिया, सो q वुड बी 3 टाइम्स ऑफ 3 इंटू 12, दैट इज 36. अब 36 इधर है नहीं, ठीक है. सो s कैनॉट बी, सो s कैनॉट बी 15, s कैनॉट बी ये, एंड s कैनॉट बी 10 ऑल्सो, बिकॉज अगर s 10 है, q 30 होना चाहिए, 30 इज नॉट देयर, राइट? सो अब s हैज टू बी, सो s हैज टू बी 4 और 5, ठीक है. s का वैल्यू है, इट इज इधर हैज टू बी 4 और इट हैज टू बी 5, ठीक है. अब s 4 है, ठीक है, s कैन बी 4, सो इफ s इज 4, देन q विल बी 3 टाइम्स ऑफ s, सो देन q विल बी 12. yes, this is possible case. One is where q is 12 and s is 4, and next when second case is when s is equal to 5, s can be 5, so when s is 5, so q would be 15. yes, this is also possible, this is also there. So these are, so s can be 4 or 5, ठीक है, and q can be 12 or 15, 12 or 15, right? These are the two cases possible. Now let's try to put this in this situation, right? So now let's see देखो, we need, let's take first case where s is equal to 4 and q is equal to 12. See, numbers are 4, 5, 10, 12, 15. So here we are taking the first case of where s is equal to 4, so s 4 है and q 12 है, इधर नहीं है. So now, so plus 3s we are taking as 4, plus we need values of r and t. So अब r value s as 4, so r का value इधर 5, 10, 15 होना चाहिए, and t has to be, अब देखो t is more than r, so t is more than r, so let's take r as 5 first, ठीक है. r as 5, अगर 5 लिया तो then t would be 5 plus 4 9, 9 plus 3 is 12. however 12 नहीं हो सकता because 12 तो q का वैल्यू है, so r is not 5, so 5 is not possible. Then let's take r as 10, so let's take r as 10, so then it would be 10 plus 4 14, 14 plus 3 is 17, so 17, t 17 तो है नहीं, so 10 भी नहीं है r, एंड r 15 भी नहीं हो सकता बिकॉज t बड़ा हो जाएगा. सो फर्स्ट केस से पॉसिबल नहीं है. सो फर्स्ट केस, सो s इज नॉट 4 एंड q इज नॉट 12. सो लेट्स चेक विथ सेकंड केस वेयर t इज इक्वल टू r प्लस s प्लस 3. सेकंड केस वेयर s इज 5 एंड q इज 15. s is 5 and q is 15. So that is 4, 5, 10, 12, 15. ठीक है, इस पे चेक करते हैं. सो s is 5, so let's take s as 5 plus r, so r as, so अब s 5 है तो q is 15, so 15 भी नहीं हो सकता. so let's take r as 4, so r 4 है तो t 9 plus 3 is 12, ठीक है, 9 plus 3 is 12, so t is 12. this is possible. so r from this we get, ठीक है, r is 4, ठीक है, s is 5, t is 12 and q is 15. so बचा हुआ, ठीक है. so see here
this is R, this is S, and this is T, and this is Q. So बचा हुआ P is 10. So we are getting value of PQRS. इसी में possible होगा. Then let's check कि other cases R as 4 लिया, R as 10 ले लेते हैं. ठीक है. So if we take R as 10, then S is 5, 3. So this would be 15 plus 3 is 18. 18 तो है नहीं. So and 10 नहीं है तो 12 में भी possible नहीं है. So we got this as the case where P is, ठीक है. अब देखो इधर P is, we got P as so P as 10, ठीक है. Then Q as 15, Q is 15, ठीक है. R as 4, then S as 5, T is 12. So we got this value. So now let's put these values in here. So P is 10 plus R is 4 minus T, that is 12. So now we need to solve this expression, that is by expression solve करो, and here we will use board mass. ऐसा कैलकुलेट नहीं कर सकते. 10 plus 4 है 14 minus 12 है 2, ऐसा नहीं. बोर्ड मास यूज करना है. पहले we will use division नहीं है, then multiplication भी नहीं है, then addition. First we will add. So that is 10 plus 4 is 14 minus 12, then subtraction. So 14 minus 2 is 2. So 2 is there in the option B is the answer. So again, very good question. So option B is the answer.